Students, today's topic which we're going to study is mechanical properties of solid. There are various properties of solids and the most important properties are elasticity and plasticity. So we'll study about elasticity and plasticity in today's lecture. But सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किसी सॉलिड पे अगर कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं और वो किस तरह से बिहेव करता है। सबसे पहले अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई किया गया है और दैट बॉडी इज नॉट फ्री टू रोटेट एंड टू मूव, उस बॉडी को मैंने कहीं बेस से पकड़ा हुआ है और वो रोटेट करने या ट्रांसलेटरी मोशन करने के लिए फ्री नहीं है, तो जैसे ही मैं फोर्स एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई करूंगा तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा और उसके अंदर इंटर इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन जनरेट होंगे जो कि इस चेंज का अपोज करेंगे। जैसे ही मैं फोर्स अप्लाई करता हूं उसके अंदर शेप और साइज में चेंज आ जाएगा और उस चेंज का अपोज करेंगे इंटर एटॉमिक या इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो जैसे ही मैं ये फोर्स हटाऊंगा तो वो सॉलिड अपनी साइज फिर से रीगेन करने की कोशिश करेगा। सो हमने क्या क्या किया, सबसे पहले बॉडी को डिफॉर्म किया, एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जिससे कि उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस हुए फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, और जैसे ही हमने फोर्स लगाया था और डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसकी इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस चेंज हुई और एक रिएक्शन जनरेट हुआ। बट जैसे ही मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया तो वो जो एक रिएक्शन है या रिफॉर्मिंग फोर्स है उसने अपने आप को इस तरह से रीअरेंज करा कि बॉडी अपनी प्रीवियस या ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करने लगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज अ डिफॉर्मिंग फोर्स। चैप्टर्स नेम इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। The first definition we are going to study is deforming force. When an external force is applied on an object which is not free to rotate or to move. Then the shape and size of object may change or we can say the distance between the atoms or molecules of the object may change. So this force, this external force is known as deforming force.
because it is deforming the crystal of the object. Now, what is an restoring force, or we can say reforming force? When the external force that is known as deforming force is applied on an object, then there will be a reaction force generated inside the solid, and that reaction is opposite to that deforming force, which try to regain the original shape and size of the object. So this reaction is known as restoring force or reforming force. So we can write तो जो रिएक्शन जनरेट हुए हैं ये रीस्टोरिंग या रिफॉर्मिंग फोर्सेस कहलाते हैं। ये रिएक्शन जनरेट क्यों होते हैं? क्योंकि हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को उनके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, तो वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के लिए ये रिएक्शन अप्लाई करते हैं, जिसको कि हम रिफॉर्मेशन कहते हैं, और इन फोर्सेस को रिफॉर्मिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब नाउ विल स्टडी अबाउट इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। व्हाट इज इलास्टिसिटी? जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसका शेप और साइज, जैसा कि हमने डिफॉर्मेशन की डेफिनेशन में देखा, वो चेंज हो जाता है, शेप एंड साइज चेंज होता है। बट जैसे ही हम वो फोर्स रिमूव करते हैं, तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो रिएक्शंस जनरेट हुए हैं वो उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, कि अपने आप को वापस उसी पोजीशन में ओरिजिनल शेप एंड साइज में लाने की कोशिश करना, ये इलास्टिसिटी कहलाती है। सो डेफिनेशन हम लिखेंगे, व्हेन द deforming force is removed from an object, the object will regain or try to regain its original shape and size. This property of object is known as elasticity. It is known as elasticity. This kind of deformation is known as elastic deformation.
elastic deformation, and the material is said to be elastic material. The examples of elastic materials are rubber band, polymers, some polymers, not all, sponge, mild steel. Mild steel is an elastic material up to some extent. There is a condition: if the object regains its original shape and size completely, then it is said to be perfectly elastic. Now we will study about plasticity. So the definition of plasticity is on removal of deforming force. The body will not regain its original shape and size. Then this property is known as plasticity. This kind of deformation is known as plastic deformation. And the material is said to be plastic material. If the body does not try to regain its original shape and size, then it is known as perfectly plastic bodies. If the object or body does not try to regain its original shape and size, then it is known as perfectly plastic. Perfectly, or we can say ideal plastic. The example of perfectly plastic bodies are putty and mud. These are not perfectly plastic but very close to the perfectly plastic body. That's all for today's lecture. We'll continue in next lecture. Thank you.